हे एफएक्सएस लास्ट वाले एपिसोड में हम यार डिटेक्टिव के पास गए थे सैलामांड्रा को ढूंढने के लिए। तो उसने सिंपली 3 लोगों के नाम बताए। तो जैसे ही हम उन 3 लोगों के से बात करके आए, एक बच्चा आया और उसने बोला कि हमें रेमस्पीड ने बुलाया है और आज हम उधर ही आ गए। तो ये रहा यार हमारे डिटेक्टिव का हाउस। अब चलो आगे देखते होता क्या है। ये रहा हमारा डिटेक्टिव और यहाँ पे एक फिस्टैग क्यों रखा है? ये क्या है भाई? देखूं क्या इसको एक बार? तो देखो ये फिस्टैग एक प्रकार का ड्रग है। तो रेमंड तो कभी इस ड्रग को लेगा नहीं। तो शायद ये किसी प्रकार का एविडेंस होगा। चलो ठीक है, अभी रेमंड से हम बात करते हैं। Welcome. You won't believe what happened. क्या हुआ भाई? Tell me, Not so fast. Remember, I have expenses. how much do I owe you? 200 orens. तो ये दोस्तों हमसे 200 ऑरेंज मांग रहा है इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है। This investigation is getting expensive. I'm not the prophet Lebiota. I can't live on roots and berries. Neither can my informers. I guarantee you these are the bare necessities. ठीक है, इसे दे देते हैं। All right, 200 orens. Down to business. They transferred the prisoner after the attack. Not good. Especially since we won't get anything else out of him. He died last night. How did that happen? Well, he wasn't in great shape, so I guess it's no surprise, but I have a feeling. Someone helped him along? Exactly. Shani's a good friend of yours, right? Ask her to do an autopsy, once we know the cause of death. Wait a minute. Are you spying on me? That's my job. See you later. ओके, तो गाइस जो प्रिजनर था जो उस हॉस्पिटल में, उसे कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। तो जिसने किया है ना, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत अभी पता लगाना है। तो इसने, ये जो हमारा डिटेक्टिव, इसने बोला कि शानी तुम्हारी एक अच्छी दोस्त है, तो वो एक ऑटोस्पी कर सकती है। ऑटोस्पी इन द सेंस कि वो जो सर्जरी वगैरह होती है ना, पोस्टमार्टम टाइप, उसके रिगार्डिंग। तो इससे सानी के बारे में तक पता है। सोचो डिटेक्टिव। चलो दोस्तों, सानी के पास चलते हैं और उससे ऑटोस्पी के बारे में बोलते हैं। वो हमें नॉर्मली हॉस्पिटल में मिलती है। 12 seconds later. तो गाइस ये रही दोस्तों शानी, और हमारे यहाँ पे एक नया कुछ है, एनाटॉमी ऑफ अ क्राइम। वैसे कुछ के नाम वगैरह हैं यार, तो ये कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है? तो हमें बस शानी से जाना और इससे ऑटोस्पी के बारे में पूछना है। Geralt, you managed to get out of prison. I did, though it wasn't easy. I've heard about your deeds. I see you're working at the hospital. I'm fighting the plague. No time for chit-chat. When can we talk? I've a room in the northern end of town. Stop by after work. Okay. Geralt, we need to talk. What is it? Some people died at the hospital. Were you involved? Explain yourself. I wanted to question a prisoner, one of your patients, but thugs interrupted us. It was their bodies the guard discovered later. I'll tell you what I overheard. The prisoner will be transported to a safe location. Thanks, Shani, for understanding. Just watching out for you. ओके, तो गाइस इसने बताया, इसने हमसे पूछा कि क्या तुमने उन लोगों को मारा था? वो मतलब वही रेमस्मिथ के लोगों को। तो हाँ, मारा था। तो इसने बोला कि हाँ, उस प्रिजनर को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। तो इससे बोलते कि हमें ऑटोस्पी में तुम्हारी मदद चाहिए। I need you to help me with an autopsy. What? That's illegal. It's necessary. Visit me at night. We'll talk. Where are you staying? I have a room in the northeastern end of Vizima. Easy to find? Opposite the house, there's a small square with a sculpture of a snake. Quickly, I need to get back to work. इसने हमसे बोला कि अभी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, रात को आना। तो रात को हम चलेंगे, अभी दिन है। और यहाँ पे एक और मिशन खुल चुका है, ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन करके, ठीक है? तो या ये हम बाद में करेंगे। बाकी अभी हमें सानी के पास जाना है, लेकिन रात को। और इसका हाउस बताऊं कहाँ पर है, अगर आपको याद हो तो ये रहा इसका हाउस। यहाँ पे वो एक स्नैक की स्टैचू तो मैंने आपको बताई थी। और ये रहा हमारा कैल्किस्टीन का हाउस, और ये रहा हमारा विवाल्डीस का हाउस। तो चलो यहीं पे चलते हैं। 8:01 p.m. ओके, तो गाइस ये रहा सानी का हाउस, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें। तो यार ये बैरल्स वगैरह आप लूटते रहिए, अगर इनमें काफ़ी अच्छे अच्छे सामान मिल जाते हैं कई बार। और यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड है, ये कैल्किस्टीन का ही नोटिस बोर्ड है। ठीक है ठीक है, जो भी है चलो रहने देते। यहाँ पे हम शानी के घर चलते हैं। यहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ है, राइट? Welcome. Make yourself at home. चलो ठीक है, इसने हमको वेलकम कर दिया। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ लूट लेता हूँ ये सब। ओके, तो गाइस ये रही शानी, और चलो इसको उठाते हैं। भाई ये क्या है? चलो। Finally, you found me. Looks like it. How'd you get past the old hag? That nice lady downstairs? She's made my life hell. हाँ, वैसे उसने हमको परेशान तो नहीं किया यार उसने। हाँ, ओल्ड हैंग शुड हैव डाइड ईयर अगो। Girls your age should be married. That's what she thinks. Is your rent low at least?
At least my rent is low. Doctors earn little in Temeria. Many leave. You stayed. Someone had to. Anyway, Yes? चलो इससे सीधे अपन बात करते हैं। Shani, I wanted to ask you something. Mm-hmm. I need your help with an autopsy. An autopsy? Since when do you deal with stuff like that? Since I started investigating Salamandra. Okay, though, I'm no coroner. You'll have to interpret our findings. We'll meet in the evening. Until then, gather as many clues as possible. I'll sniff around. Get the body from the gravedigger. We'll meet at the hospital in the evening. How do I find Ask Vincent Mice, but also look for books on anatomy and pathology. Farewell. ओके तो गाइस इसने बोला है कि हमें ग्रेव डिगर से बॉडी लेके आनी है उसकी। ठीक है, तो वो हम लेके आएंगे और हमें थोड़ी सी बुक्स वगैरह भी पढ़नी है किस किस चीज़ की। तो हमें यार ऑटोनॉमी और प्रोफेसरी करके कोई बुक्स होती है वो पढ़नी है। तो मेरे पास यहाँ पे एक प्रोफेसरी करके बुक है जो कि मुझे इसमें से मिली थी, तो इससे पढ़ लेते हैं हम ऐसे करके। और ठीक है, जो भी है पढ़ लिया ना। क्या है भाई इसमें। और यहाँ पे दोस्तों जितनी भी बुक थी ना, जैसे कि ये हुई या फिर ये हुई, इन सबको पढ़ लिया। इससे कुछ कुछ खुला है और इनको फेंक देते हैं ऐसे करके। इसका फिर अब कोई काम नहीं, फालतू। और चलो ग्रेव डिगर के पास चलते हैं यार, उससे हम वो बॉडी लेके आते हैं। ओके गाइस, अभी रात का टाइम है तो ग्रेव डिगर अभी तो नहीं मिलेगा, तो पहले तो मुझे दिन करवाना होगा। साथ ही साथ शानी ने ये भी बोला था कि यार विंसेंट मैस करके जो जेलर है उससे बात करना, वो हमें कुछ बता देगा इन सब के बारे में कि कैसे ऑटोनॉमी वगैरह करते हैं। तो आई थिंक विंसेंट हमें यहाँ पे मिलेगा वेयर हाउस में, और अब शायद हम इस वेयर हाउस के अंदर जा सकते होंगे। चलो देखते हैं। ये रहा उसका वेयर हाउस, और मैं एक बार वो मिशन और देख लेता हूँ, सस्पेक्ट विंसेंट मैस करके। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कुछ में ऐसा मार्क कर लेते और अंदर चलते हैं। No sign of Javed or the professor. This bunch should cave easily. अब ये Let's तो do this. सैलामांडास के लोग हैं ना, ये शायद यही होगा भाई गद्दार। हाँ, यही सैलामांडास के साथ डील कर रहा है। Who's this? This wasn't our deal, cop. Relax. Just a witcher. Surely you know witchers are golems. No will of their own. Follow orders quick and easy. No complaints. Right, Geralt? Right. See? Nothing to be afraid of. You didn't exactly come alone. Now let's deal. I don't trust him. Heard he was a fucking murderer, cut up over a dozen of our people. Let's not play who killed who. That's the past. We're interested in the future. Your future. Which will be unpleasant if Javed learns you cheated him. And believe me, he'll learn shortly if you don't start talking. You bluffing. You don't scare me. Enough. Where's Javed? Where are the Witcher's secrets? Spit it out before I feed you to the rats. Vincent, stop him. I know nothing. I was assistant to Salamandra's accountant. Javed stopped trusting me. I don't know where he is or what he intends. The professor? I don't know. He went off somewhere. Bullshit. You need encouragement. You promised me protection in exchange for my testimony. On my mother's grave, I know nothing. Stop him. You're a cop. This is murder. You're gonna stand by and watch? No, I'm leaving. Besides, I know you had a part in murdering Raymond's family. Witcher, make it quick. ओके तो गाइस, ये तो इसका कोई वो नहीं है कनेक्शन सैलामांड्रा से। लोग यार प्रोटेक्शन मांगने आए थे, इसने गद्दारी वगैरह का ली इन लोगों ने उससे, जावेद से। तो इन लोगों को मारना काफ़ी इजी, ग्रुप स्टाइल में मारो बस। और यहाँ पे दोस्तों ये सारे मर गए हैं, और अब मुझे लगता है शायद विंसेंट से बात करनी होगी, ऐसा नीचे लिखा हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले तो इनके पास से जो भी मिल रहा है सब अपन ले लेते, मतलब ख़रीद के लेते। तो गाइस जो भी कुछ मिलना था मिल गया। अब हमें शायद विंसेंट से जाके बात करनी होगी, क्योंकि अभी तो रात है तो वो ग्रेव डिगर वगैरह भी हमें मिलेंगे नहीं। तो या अभी तो हमें विंसेंट से बात करनी है, तो मैं चलता हूँ वहीं। तो गाइस अभी तो हमें यहाँ पे विंसेंट नहीं दिखा है, तो आई थिंक हमें सुबह आना होगा। तो पहले तो मैं चलो सो जाता हूँ, और या सुबह मिलते हैं, और फिर उसके बाद विंसेंट से बात करेंगे, फिर ग्रेव डिगर से उसकी बॉडी लेंगे, ऑटोस्पी करेंगे, और उसके बाद पता ही चल जाएगा शायद। ओके तो मैं रेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, सुबह का इंतज़ार कर लेता हूँ। और आई थिंक देखो हमने जितने भी ये सस्पेक्ट्स थे ना, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊँ, कल के सीन से बात कर लिए, इनोसेंट निकला, लवर्डीन तो ये भी इनोसेंट निकला, रैमस्मीड भी इनोसेंट है, और थेलर से बात करी तो ये भी इनोसेंट ही है। विंसेंट मैस भी एक हिसाब से ठीक ठाक ही है, मेरे को नहीं लगता इसने कुछ किया होगा। विवर्डीन से बात नहीं करी, वो बोना है जिससे हमने बुक ली थी, तो वो क्या करेगा यार वो भी इनोसेंट ही होगा। तो ये सारे के सारे अच्छे लोग लग रहे हैं यार मुझे, ये इनमें से किसी ने कुछ नहीं किया।
आई थिंक हमें और कुछ क्लूज वगैरह मिलेंगे तो शायद हम पता लगा सकते हैं। तो पहले तो चलो मैं आपको रात कर लेता हूँ यहाँ पर, सॉरी सुबह कर लेता हूँ। तो गाइस ये हो चुकी है सुबह और ये रहा हमारा विंसेंट मैस। ये देखो ये शॉट चमका रहा है। मारना है क्या भाई तुझे? मेरी शॉट बताऊँ तुझे? रुक रुक इसको मेरी शॉट निकाल रहा हूँ, नहीं निकाल पा रहा है। चलो ठीक है, इससे बात करते। How did things go at the warehouse once I left? Quickly. Good. I admit I was hoping for a bit more, but it's always a few bandits less. That's the last time you use me. I'm not a general avenger. Had no choice, believe me. It won't happen again. You have my word. I guess you plan to continue the investigation. Don't have a choice. I can't help officially, but I'll leave you to it. Anything you learn, I'd be glad to hear. तो मेरे हिसाब से बताऊं, हमने इससे पूछा कि यार जब हम कॉकरीज को मारने गए थे तो किसने उनके बारे में बताया था। तो मेरे हिसाब से शायद प्रोफेशन ने बता दिया होगा या फिर इसी ने, पता नहीं। शायद इस ये बोलूँ कि मैं सेवरल पॉसिबिलिटीज़, नहीं हाँ ये Several possibilities, mostly pointing at you. I'm not going to explain myself to you. You let the professor out of prison. His bail was paid. That's the law. चलो ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये भी है। ये यार छोटा सा गाड़ी ये क्या करेगा, पता नहीं मैं सब पे बिलीव क्यों कर रहा हूँ। Observe the law at all costs. What do you do nights? Meet your boss, Azar Javed? Nothing unnatural about spending nights in the trade quarter. I see. I've got no real proof, so I'll have to wait to decide. Sounds like your mountain has turned into a molehill. That's what happens when amateurs try their hand at serious work. If you stumble upon any real leads, come by. I'll give you some useful advice. ठीक है, तो गाइस ये भी इनोसेंट ही निकला। चलो इससे और बात करते हैं सबसे पहले तो। Your reputation precedes you. I heard you killed 3 monsters and brought in proof. True. A special reward. This runic stone. Use it well. The city should offer more rewards soon. ओके, तो इसने किसी मॉन्स्टर्स के बारे में बताया। ठीक है, ये सब तो ये बात की बातें। हम इससे ऑटोस्पीस के बारे में You ever पूछते do हैं। autopsies? What for? Punctured stomachs mean gang warfare. Torn off heads mean beasts. And black tongues mean poison. The first case, we pressure ram's meat. The second, we pass on to the order or a witcher. The third, we go to the victim's wife. The culprit 90% of the time. Autopsies are a waste of time. ओके, तो इसने भी ऑटोस्पी कर दी थी उस प्रिजनर के ऊपर। तो या अभी इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला। इसने बोला कि सबसे पहले तो मुझे रैमस्मिथ के ऊपर शक हुआ, लेकिन उसके बाद उस पर नहीं हुआ और फिर किसी और पे हुआ। तो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। लेट्स सी, हम ऑटोस्पी करके देखते यार, एक बार उसके पास चलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों उसने हमें ये भी दिया स्नेवर रून स्टोन करके, उसी विंसेंट ने। तो या ये हमारे काम आएगा आई थिंक बाद में। तो या इसे यूज़ अभी रख लेते हैं और चलते हैं उस ग्रेव डिगर के पास। तो ग्रेव डिगर से जाने से पहले एक बार यार विवर्डी से भी और पूछ लेते, क्योंकि ये भी एक सस्पेक्ट लिस्ट में है। वैसे तो मुझे नहीं लगता इसने कुछ किया होगा, लेकिन फिर भी पूछ ही लेते हैं। चलो आई थिंक कहाँ है विवर्डीन, जहाँ ये पहले तो जो भी इसके पास मिल रहा है ना सब लूटते हैं। ये काम पड़ता है। ठीक है, ये है विवर्डीन करके। ठीक है, इससे बात करते हैं। What brings you here? I'm looking for the leader of a certain organization. You suspect me because I'm a dwarf? I have several suspects, not only dwarves. What do you want? I've got my eye on you. Come back when you stop talking crap. I want to discuss Salamandra. Why? The professor's bail money came from your bank. You offend me deeply with this slander. But Generations of Vivaldis built this bank, and you suggest our gold serves criminals? Out! ये तो ठीक है, इस पे बिलीव कर I लेते हैं। believe you. Nothing but a pile of suspicions. I have to assume you're clean for now. You've rejected racial prejudice and realized the truth. When you discover the true culprit, you tell me. I'm curious who it is.
ठीक है, तो गाइस इसने भी कुछ नहीं किया है, ये भी अभी के लिए तो कैसा हंस रहा है वे? हाँ, अभी के लिए तो ये भी इनोसेंट ही है। चलो तो चलते हैं सीधा उसी के पास, किसके पास, ग्रेव डिगर के पास। Few moments later. ओके, तो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ग्रेव डिगर के पास। लेकिन ये क्या भाई, ये किसको लटकाया हुआ है? ये किसी को फांसी वगैरह दी होगी इसने। ये तो अच्छा, ये सैलामांडास के लोग हैं, स्कॉटेल वगैरह हैं। अच्छा समझ गया, मैंने वो स्कॉटेल को मारा था ना, शायद ये वही लोग होंगे। Siegfried spoke of you. अच्छा, ये सीफर्ड की बात कर रहा Strength है। within us will heal the world. चलो ये बच्चा, ये रहा हमारा ग्रेव डिगर। The town cemetery. The dead and undead await behind that gate. Plenty of work for a witcher. तो इस गेट के पीछे बहुत सारे डेड एंड डेड मतलब मॉन्स्टर्स वगैरह रहते हैं, तो यहाँ पे हमें खूब सारा काम भी मिल सकता है। या तो सबसे पहले तो इससे बात करते ग्रेव डिगर से। हेलो सर। Will it be pine or oak, perhaps? An entire crypt? Let's see. 5 ells wide. What are you talking about? Why would you come to a grave digger? So I ask you, who will you be burying? Fear not, my prices are reasonable. I'm here for another reason. You should plan ahead. Very well. What is it you want? A prisoner died recently. Is he in the cemetery already? Don't know. You can have another body. They all reek the same. I'm after a specific corpse. Particular. Come back when you know what you want. Examining remains is an art. Always worthwhile to look deeper. But who does that concern? Could you hand over the prisoner's body for an autopsy? For a bottle of dwarven liquor. ओके, तो गाइस हाँ, हमने इससे पूछा कि तुम उस प्रिजनर की बॉडी हमें दोगे ऑटोप्सी के लिए, तो इसने बोला कि एक मुझे डॉर्वन लेकर रहती है, डॉर्वन दारू, तो इसको वो देना है। तो यार मेरे पास एक ये है, लो इसको दे देते ये करके। Nothing like a good drink. About the prisoner. Where you want the body dumped? At the hospital. It'll be there by evening. Farewell. ओके, तो इसने उस बॉडी को उधर इवनिंग में ही उधर दे दिया है हॉस्पिटल में। तो गाइस जो ऑटोस्पी है वो हमें रात को करना है, लेकिन उससे पहले यार यहाँ पे इस गार्डनर है, इससे हमें कुछ बुक्स वगैरह या कुछ बातों का पता This लगाना है। hospital garden. You seem to like what you do. Like it? I love plants and know 'em well. I spent my life dealing in bloodshed. Now's my chance for peace and quiet. Bloodshed. It's no point of pride, but I long earned my living as a mercenary. Those times are behind me now, and here I am content. तो गाइस ये इससे हमें कुछ बातों का पता लगाना है, क्योंकि पहली बार हम ऑटोस्पी कर रहे हैं, तो हम बिना उसके तो कर नहीं सकते, कुछ नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो इससे मैं मर्सनरी डेज के बारे में पूछता Tell हूँ me कुछ। about your mercenary days. Bring me a morsel to eat and we'll talk. तो इसको कुछ खाने के लिए चाहिए। क्या है ये? चीज़ है। ले चीज़ खा सकते हो सर क्या आप प्लीज़? Delicious. Amazing how honest toil can stir the appetite. Thank you, Witcher. You were saying. During the war, I served as a mercenary under pretty Kitty herself. You've heard what a warrior she was. What a woman. Strong women. Nothing on this earth like them. Too true. We could take on anyone. I saw half the world as a member of Pretty Kitty's corps of mercenaries. We even went to Zerrikania. That's really far. It was hell. Hot as an oven and humid as a bathhouse. We massacred the natives while Zerrikania massacred us. They have flies there that creep up your nose at night and lay eggs. Then the larvae eat your brain and crawl out your eyes once they mature into flies. Disgusting. Many of us died thus. There were also diseases, venomous spiders and snakes, and many other afflictions I can't even name. I even saw a striped horse. After almost 8 months of fighting the jungle, we had to retreat. Interesting story. Thanks. Look how they grow. कि तो गाइस इससे वो स्टोरी तो सुन ली, इससे ये भी पूछ लेते ना। Don't you fear the plague? My garden brings joy. When Melitelli decides my time has come, I will go happily. Godspeed. तो यहाँ पे एक नई एंट्री हुई है किसी चीज़ की। लेट्स सी क्या है वो। अच्छा, जेरिकानिया कुछ है, मतलब यहाँ पे
कुछ होगा शायद। ठीक है, जो भी है देखते हैं। अब चलो हमको ऑटोस्पी करनी है, लेकिन उससे पहले हमें रात करनी होगी, तो सबसे पहले चलो मैं जाके रात कर लेता हूँ। ओके तो गाइस यहाँ पे रात हो चुकी है, यहाँ पे आप देख लो। और यहाँ पे कुछ हर्फ वगैरह हैं, इनका नाम नहीं आ रहा, तो मैं इनके ऊपर एक बुक वगैरह है वो ख़रीद लूँगा। चलो तो हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं, यहाँ पे हमको मिलेगी शानी और उससे ऑटोस्पी क्या बोलते हैं। ओके तो गाइस ये रही शानी। हेलो। Ready for the autopsy? यस। Let's get started. चलो ये ऑटोस्पी स्टार्ट कर रही है। ओके ये क्या भाई डॉक्टर सारू के सर तारिका मैम राइट। Race, human. Gender, male. Wounds, extensive. Shani, this isn't a lecture hall. Whatever you say. He died yesterday, torn to pieces. What do you think? It could have been ghouls. So, he was torn to pieces after he died. I'm interested in the cause of death. I also see some stab wounds. A blade 2 fingers wide. किसने किया? देखो 2 फिंगर वाइड का जो वो है, अगर इसमें मैंने कोई गलत चॉइस ली ना, तो सच बता रहा हूँ मैं किसी और दूसरे को मार दूंगा। हाँ, एट लास्ट कंक्लूजन में हमें रिजल्ट वही मिलेगा, लेकिन इनोसेंट को नहीं मारना मुझे। तो असिस्टेंट डेगर तो ये रैमस्मीट तो भाई मेरे को नहीं लगता। अब अगली बात है इसका अननेचुरल पोजीशन, ये सब तो फालतू चीज़ है। बाकी ये कैसा है? नेक मसल्स इसको External करता हूँ। signs aren't everything. His neck muscles and palms look tense. Normally I base it on muscle stiffness and dehydration, but rigor mortis is persisting for too long. They say successful autopsies are based on curiosity. Should we look? Let's check his internal organs. ओके तो अभी इसके इंटरनल ऑर्गन्स चेक कर रही है। We'll all die. कर लिए? कुछ तो नहीं कर रही। The symptoms are peculiar, and the cause of death, too. Those wounds are too obvious. I suspect something more. Poison? If so, a rare sort. Perhaps an alchemist's brew. Kalkstein? Ah! Liver's completely cirrhotic. It was obviously a potent poison. This stinks of alchemy. भाई कैल्कस्टीन तो नहीं हो सकता। This is too easy. Life can be simple sometimes. Are you certain poison is the only explanation for the unusual rigor mortis? The most likely cause. I have a sinking feeling there's more to this. We can try the coroner's last resort, opening the skull. ओके तो अभी स्कल खोल रही है। खोलो सर, मैडम तारिका मैम। मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा स्कल। मेरे को लगा यहाँ पे शो 3 का सीन आ जाएगा पूरा स्कल खोलते हुए दिखेगा। नहीं। Opening the skull, always a pleasure. See that in the brain? Larva of the Zeracanian tsetse fly. But how did they get in his brain? It's part of their development cycle. If we were in Zeracania, I'd say a fly crawled up his nose and laid its eggs. We're in Temeria. Our climate is too cold and dry for the tsetse fly. Even if someone brought eggs, how would they get up his nose? What do these eggs look like? Tiny, white, like flour. Or Fistek? Geralt, I gave him Fistek before he died. He was suffering terribly, and we had no other anesthetics. I thought it was safe. Where did you get it? From your friend, the detective. He told me it was from special stock. Raymond. Then we have a problem. He added eggs to the Fistek, then came here at night to fake the other evidence. That doesn't sound like Raymond at all. My medallion vibrates whenever I see him lately. And Zeracania? That's where Azar Javad is from. The real Raymond may no longer be with us. But I saw him just yesterday. Azar's using an illusion, trying to manipulate me. Thanks, Shani. I couldn't have figured it out without you. What will you do now? I'll talk to Kalkstein first. He should help me prepare. ओके तो गाइस बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ अभी यार। इसने कहा है, इसने मतलब हमने इस ऑटोस्पी में ये पाया है कि जो इसको रेमंड ने ही मारा है। रेमंड, और वो रेमंड जो है ना वो नकली रेमंड है। असली रेमंड तो शायद कहीं मर चुका है। तो जो आज़ार जावेद है ना, उसने रेमंड का भेस बनाया हुआ है, एक इल्यूज़न वगैरह किया हुआ है। इसी कारण से वो हमें थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है। इसी कारण से उसके घर पे वो एक फिश टैग रखा हुआ था, और क्योंकि रेमंड तो यार फिश टैग लेता नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों
इसको मतलब जिस तरह से इसके ब्रेन में मारा मारा गया जो भी हुआ है ना, तो उसमें एक ऐसा कुछ पाया गया है जो कि सिर्फ एक ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे आज़ार जावेद रहता है। तो आज़ार जावेद ज़ेरी केनिया में रहता है, जहाँ पे मतलब बर्फ़ वगैरह है, ठंडी का मौसम है, ऐसा कुछ है। तो या ये सारे प्रूफ ये बताते हैं कि आज़ार जावेद ही रेमंड है, यानी कि वो डिटेक्टिव। तो या अगले एपिसोड में हम उस आज़ार जावेद को ही पकड़ेंगे, मतलब हमारे रेमंड को, और पता लगाएंगे कि यार कैसा क्या है। लेकिन हाँ, हमें अभी तो कैल्किस्टीन की भी मदद लेनी पड़ेगी। तो सब कुछ अगले एपिसोड में होगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको दोस्तों अगले एपिसोड में। टिल देन बाय।